कहा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन a body oscillates simple harmonically with a time period of 2 seconds after what time its kinetic energy will be 75% of the total energy. So kinetic energy will be what 75% of the total energy. So हम लोग क्या जानते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू what in SHM, that is the equation of kinetic energy. We know that half m omega square a square minus x square, and for equation of potential energy is what half k x square. Okay, so टोटल एनर्जी कितना होगा अगर हम दोनों को ऐड कर दें, द टोटल एनर्जी विल बी व्हाट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो ये कट आउट होके कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कट आउट होके, दैट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. ओके, सब क्वेश्चन में कहा गया है दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी 75% of total energy. So if we write this in equation that kinetic energy will be 75%, that means 75 by 100 of total energy का 75% होगा. So then we can say that kinetic energy is equal to 3/4 of total energy. Okay, so from here we can say that equation of kinetic energy is half m omega square a square minus x square will be 3/4 of what total energy कितना है, that is half m omega square a square, that is half m omega square a square. Okay, so if we do calculation then this will be what, the half m omega square and this half m omega square will be cancel out. So the rest part will be what, a square minus x square will be 3a square by 4. From here it will be 4a square minus of 3a square will be x square. So our value of x will be come out to be what, this will be the 4x square. So x will be root under a square divided by 4. So finally the x will be a by 2. Okay, so हमारा x कितना आया, a by 2, मतलब a by 2 डिस्टेंस में आके इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा 75% ऑफ द टोटल एनर्जी हो जाएगा. ओके, सो नाउ वी नो व्हाट, we know that for SHM that x equal to a sin omega t plus phi. Okay, phi क्या है, इनिशियल फेज, that is the initial phase. So क्वेश्चन में कहा गया है that starting from the origin, तो origin से बॉडी स्टार्ट हो रहा है, तो origin में क्योंकि बॉडी स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ पे origin में कितना होता है, that x equal to 0 है, सो यहाँ पे phi भी कितना होगा, 0 होगा. So at origin the initial phase phi equal to 0. Okay, so x equal to what, a sin omega t. सो कंडीशन दिया गया है x क्या होगा वहाँ पे, a by 2 we get. So if we put the value of a by 2 here, so this will be a by 2 will be a sin omega t. So sin omega t will be equal to half. तो यहाँ से हम लोग अगर ओमेगा टी का वैल्यू निकालें,
So that will be what? That will be sine omega t will be equal to sine 30 degree, that will be pi by 6. So sine will be out, so omega t will be pi by 6. So here say we can say that omega equal to what? We know that omega equal to 2 pi by t, okay, into time equal to pi by 6. So टाइम पीरियड कितना कहा गया है? So time period has been given as 2 seconds. So if we put the value of 2 here, t equal to 2, then 2 will be cut out, will be pi t will be pi by 6. तो यहाँ से t का वैल्यू आएगा कितना? 1/6, मतलब सेकेंड में. So हमारा आंसर विल बी व्हाट? आवर आंसर विल बी 1/6 second. After 1/6 second, it will be 75% of the total energy. Okay.